So already we have started the tracking agile project and the reports, that is chapter number 5. So how we are going to track the agile project, how we are going to track the project, and how we are going to monitor the progress of agile software development. So, Agile Project Management, that is APM, is a repetitive procedure for planning and directing the way of project process. So, we have seen that when we adopt the Agile methodology, at that time we are going to do the repetitive procedure. Suppose there is a software and we want to develop that particular software and we adopt the Agile methodology. At that time, we are going to have, or we are going to develop software into the iteration, means a small part, a small iteration we are going to develop, and we are going to deliver that particular small part or small functionalities to the customer. So in agile software development, agile project is finished in a small scale component. So these sections are called the repetition. So हम जब छोटा सा पुर्जा बनाते हैं या छोटा सा मॉड्यूल बनाते हैं एंड देन हैंड ओवर दैट पर्टिकुलर component, that is a small scale component, to the customer and try to get the feedback from that particular customer. We tell the customer that you just use this small scale component in your day to day business activity, and if you have some suggestion, if you have some updation, if you want some changes in this particular small scale component or the repetition, you do communicate with us and we are going to update that particular things. That is a agile methodology. So this section is called the repetition, and each section or process is discussed or inspected by the project team, and this is done in the presence of the project's various shareholders. So when we give this particular small component to the customer, and when they use that particular small component in the business, and they are giving us the suggestion about what they want, what they don't want, is there any updation, is there things to be update in this particular small scale component. So this way they give the feedback, and if there is some updation, if they want some update in the small component, then we are going to change that particular thing. So in agile methodology, we almost welcome the changes at any stage. Then after this, what is the next step? So as you know that the iteration is the phrase that is given to the replay of a block of orders inside a computer program for a sum total of samples until the ranking is identified. So this perception are captured and are used to direct what the next step should be in the project. The main advantage of agile project is to power of that particular agile methodology, and to answer the topic as they come light all along with the course of the project. So what is agile project methodology? So agile project modules or apprentice crack down the project into the little pieces, and that are done in a work session, and that run in the pattern from the testing to the quality assurance. अभी agile project management हम कैसे कहेंगे कि जो भी हमें सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करना है, वो क्या करना है, स्मॉल स्मॉल पार्ट में हमें क्या करना है, कंपोनेंट डेवलप करना है, और स्मॉल स्मॉल पार्ट में कंपोनेंट डेवलप होने के बाद हमें क्या करना है, और डिलीवर करना है until the quality assurance which is acceptable by the customers. So one of the most well liked and popular agile development plan or process is known as a scrum. So the sprint is the word. Sprint is applied in agile project management and clearly in the scrum method. Mostly scrum is made apparent and determined by the frequent work cycle. A scrum is nothing but it is a repetition,
जैसे कि हमें स्क्रम मास्टर होता है, स्क्रम इज नथिंग बट इट इज़ अ प्रोजेक्ट, एंड स्प्रिंट इज नथिंग बट इट इज़ द रिपीटेशन, और इट इज़ हम उसे क्या कहेंगे, रिपीटेशन हम करते हैं जब हम इटरेशन हम उसे बोलते हैं, तो हम उसे क्या बोलेंगे, स्प्रिंट बोलेंगे। एंड स्क्रम इज नथिंग बट इट इज़ योर प्रोजेक्ट. So, and the what are the different cycles you follow in that particular scrum, and these work cycles are known as the sprint. And sprint means what, the different iteration. अभी sprint समझ में आ गया आपको, means the particular software we are going to deliver, or a particular software we are going to develop in a particular iteration, means small part, small scale component we are going to develop and deliver that particular component to the customer. And that particular small part, or that particular repetition is called as a sprint. Understood what is meant by sprint? And sprint and scrum means the different cycles which you are going to use for develop a whole software, that is a scrum. Though that particular sprint are normally small or repeated, short, and they run mostly on the days or maximized to weeks, and they are usually 2 or 4 weeks long. And these agile proceedings allow team to release a piece or portion as they are completed, and this constant release schedule makes it possible for team to make clear that these components are successful, and if for some reason it is not, then to fix the mistake quickly. And hopefulness is that it helps to lessen the change of large scale failure, because this is a constant improvement all over the project life cycle. अभी agile project management क्या है, आपको क्या समझ में आ गया agile methodology में, इशिता, हम कैसे डेवलपमेंट करते हैं agile methodology? When we adopt the agile methodology, how we are going to develop the software? Yes, ma'am. Dhanasri, will they? Dhanasri, Dhanasri, will they? इशिता, आप बताओ. When we adopt the agile methodology, then how we are going to monitor, how we are going to develop the project or software? Yes, हम क्या करते हैं, स्मॉल स्मॉल कंपोनेंट डेवलप करने की कोशिश करते हैं. बड़ा सा प्रोजेक्ट होगा तो उसमें से छोटा सा पार्ट लेते हैं, छोटा सा मॉडल लेते हैं, उसको डेवलप करते हैं, और वो हैंड ओवर करते हैं कस्टमर को. मैंने ये बार बार बताया आपको. यस. यस मैम, हम पहले प्लानिंग करते हैं, फिर डिजाइनिंग करते हैं, फिर प्लानिंग टेस्टिंग डिजाइनिंग करते सब हैं. एक ही बार करते हैं, और सब छोटा छोटा पार्ट हम पहले डेवलप करते हैं, और वो कस्टमर को हैंड ओवर करते हैं. अंडरस्टूड. यस मैम. आगे फॉर एग्जांपल आपको बोला है कि लाइब्रेरी का सॉफ्टवेयर बनाओ, तो आप पूरा बना के उसको फिनिश नहीं करोगे, पहले छोटा पार्ट बनाओगे. लाइब्रेरी में कौन सा है, बुक इशू का पार्ट है फॉर एग्जांपल, बिग बुक इशू का मॉड्यूल है, वो क्रिएट करोगे, और वो लाइब्रेरी को देंगे, और उसको बोलेंगे ये यूज़ करो और हमें बताओ इसमें कुछ चेंजेस है क्या. और जो हम वो दे रहे हैं हम उसको बोलेंगे इटरेशन. इन मीन्स यू आर गोइंग टू डेवलप अ सॉफ्टवेयर इन टू द इटरेशन. फर्स्ट इटरेशन में आपने बुक इशू का मॉडल दे दिया, दूसरे इटरेशन में बुक रिटर्न का दे दिया, तीसरे इशू में कुछ फाइन का होगा आपका, तो वो देंगे उसमें, चौथी इटरेशन में पूरा सॉफ्टवेयर देंगे. मीन्स आप थोड़ा 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 करके क्या करते हो, सॉफ्टवेयर बनाते हो, और उस इटरेशन को हम स्प्रिंट बोलेंगे. क्या बोलेंगे, स्प्रिंट. 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 और जो साइकिल होती है उसे हम स्क्रम कहेंगे. स्प्रिंट मीन्स व्हाट, द इटरेशन.
फर्स्ट स्प्रिंट बुक में क्या दिया, एक छोटा सा मॉड्यूल दिया, जैसे कि लाइब्रेरी का सॉफ्टवेयर था आपका, हमने क्या कर दिया, छोटा सा उसका बुक इशू का हमने बनाया पूरा, और उसको यूज़ करने के लिए बोला, और उसको बोल दिया इसमें कुछ चेंज लगता है क्या आपको, वो बोलिए हमें और वापस दीजिए, कुछ अपडेशन होता है तो हमने वापस उसमें चेंज कर दिया और नेक्स्ट स्टेशन में उसको दे दिया. So when we adopt the agile methodology, we are going to develop a software in a iteration. उसे हम स्प्रिंट कहेंगे. अंडरस्टूड. ये मैंने कम से कम 100 बार बोला है अभी तक. धनश्री वेल्दे, धनश्री दस, Yes, sir. आर यू गेटिंग? Yes, sir. Yes, sir. ओके, वेरी गुड. तो हम छोटे छोटे इटरेशन में क्या करते हैं, कस्टमर को देते हैं यूज़ करने के लिए, और उनको बोलते हैं कि अगर आपको इसमें कुछ चेंज मांगता है तो हमें बताइए, वी आर गोइंग टू मेक द चेंजेस इन योर रिक्वायरमेंट, एंड आल्सो वी मेक द चेंज एंड अपडेट द सॉफ्टवेयर. अंडरस्टूड. सो दिस इज Yes, द sir. अजाइल मेथडोलॉजी. अजाइल मेथडोलॉजी में हम छोटे छोटे पुर्जे में इटरेशन, हम उसे कहेंगे इटरेशन. जैसे कि हमने यहाँ पे देखिए बोला है, अजाइल प्रोसीडिंग अलाउ द टीम टू रिलीज द पीस ऑफ द पोर्शन एज दे आर कंप्लीटेड. जितना छोटा छोटा आपका पुर्जा होगा आप उसको रिलीज कर दिए, आप उसको कस्टमर को डिलीवर कर दिए. सो दैट इज अ अजाइल प्रोजेक्ट मेथडोलॉजी. So this constant release schedule make it possible for the team to make it clear that these components are successful, and it for some reason it is not successful, then fix the mistake quickly. Means after delivery of that particular small component, if customer think that there is some mistake, if there is a need to be update something, then this particular agile team welcome the changes from the customer and quickly make the changes in the software, quickly make the changes in the small component, the part of that particular component, and again hand over that particular software or small scale component to the customer. That is the sprint, or you can say the first iteration. Understood? Yes, sir. Yes, sir. Then what is agile planning? So traditional project planning follow the big bang approach, where the changes is coordinated and delivered at one fixed time. So this often comes at the end of the project after the lengthy period of the detail upfront planning, designing and testing. अभी इसमें क्या होता था, ट्रेडिशनल मेथोडोलॉजी में क्या होता था, हम कस्टमर बीच में हमें इंटरेक्ट करता था क्या, मीन्स व्हेन द डेवलपमेंट इज देयर, व्हेन डेवलपमेंट स्टार्ट इज देयर, व्हेन डेवलपमेंट इज रनिंग देयर, and when we follow the traditional methodology, is there any involvement of a customer when we follow the traditional methodology to develop the software? No, sir. हाँ, नो. एम आई राइट? मीन्स हम पूरा सॉफ्टवेयर बनाते थे और पूरा होने के बाद कस्टमर को क्या करते थे, डिलीवर करते थे. राइट? Yes, sir. ओके. अभी अजाइल मेथोडोलॉजी में हम क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं अजाइल मेथोडोलॉजी में? कस्टमर का इन्वॉल्वमेंट. हाँ, कस्टमर का तो इन्वॉल्वमेंट आएगा, बट कैसे आएगा, छोटा पार्ट हो गया, छोटा एक दो पेज हो गए, उसको दे दिया, उसको बोल दे इसमें क्या चेंज करने हैं बता दे हमें, उसके वापस चेंज करके आगे के दो पेज कर दिए, उसको दे दिया. अंडरस्टूड? when we follow the agile methodology, at that time we deliver the particular software in a small scale component, छोटे छोटे पुर्जे में डेवलप करके कस्टमर को देते हैं और उसको बोलते हैं कुछ चेंज है तो दे दे. So this is the main difference, means there is a involvement of a customer at each and every stage of the development when we adopt the agile methodology.
अभी इमेजिन करिए यू आर डेवलपिंग द 10 different pages एंड इज सर्विंग अ डिफरेंट फंक्शन. अभी आपके पास क्या है, एक सॉफ्टवेयर है, जैसे कि वेब पेज है, वेब पेज आपको डिज़ाइन करनी है, उसके 10 पेजेस है. तो आप क्या करोगे, पहले एक पेज बनाओगे, उसको दे देंगे कस्टमर को. उसमें अगर कुछ चेंजेस है तो बोलेंगे कि हमको बताओ उसमें कुछ चेंज करने हैं क्या, लुक एंड फील चेंज करना है क्या, कलर चेंज करना है क्या. अगर उसने बोल दिया, उसने कुछ अपडेशन बोल दिया, तो हम क्या करेंगे, ले लेंगे, वापस उसमें चेंज कर देंगे और वापस उसको एक पेज दे देंगे उसका. अंडरस्टूड. लेकिन व्हेन यू फॉलो द ट्रेडिशनल मेथडोलॉजी, you develop all the 10 pages, then deliver all the 10 pages to the customer. And if there is a change, if there is a updation, then it comes in the maintenance phase when you adopt the traditional methodology. But here the scenario is different. You deliver one pages or two pages every week to the customer, and you welcome the changes from the customer side. So if you deliver the website or applying the agile principle, and you make the structure of your website project to deliver the 2 pages every 2 weeks, the project will still take the 10 weeks to complete, of course. So but after only 2 weeks, you customer can start accessing the website and start receiving the value, what the different value you are going to add into that particular pages. So he's tried to access the what the value you have put it in that particular website. So every 2 weeks, the customer try to access the website. When you adopt the agile methodology, so this is, it may looks at the project level, but how does it fit into the wider business landscape? So there are different level of agile planning. So there are 6 level of agile planning. When making the change at the pace, it's important to plan effectively. The agile planning process happens on 6 different levels. So there are 6 level of agile planning. First one is strategy. कौन सी है first planning, first level, that is strategy. how strategy. how do we achieve the business goal and the objective. Then second level of the agile planning, that is portfolio, what the products and service will help to achieve the strategy. Then third level, that is a product, what requirement will a product fulfill and what feature will it have. Then first level of agile planning, that is a release, what the product features will be delivered in this release. आप इस रिलीज में उस प्रोजेक्ट में क्या क्या फीचर डालने वाले हो, दैट इज द लेवल ऑफ अजाइल प्लानिंग. जैसे कि आपने देखा व्हाट्सअप, व्हाट्सअप में रिलीज करते वक्त अलग अलग फीचर उन्होंने क्या किया है, ऐड किया है. द सेम वे when we are going to release a software, at every release we are going to add something into that particular software. दैट इज द रिलीज. रिलीज हम जब सॉफ्टवेयर करते हैं, तब उसमें कुछ तभी नया फंक्शन हम क्या करने वाले हैं, ऐड करने वाले हैं, नया फीचर हम क्या करने वाले हैं, ऐड करने वाले हैं. The next level, that is fifth level of agile planning, that is iteration or a sprint. So what feature will develop during this product iteration? When we adopt the agile methodology and we deliver the particular product in a iteration, then we are going to decide first iteration में कौन से फीचर देने वाले हैं, सेकंड इटरेशन में हम क्या क्या देने वाले हैं, थर्ड इटरेशन में हम क्या क्या देने वाले हैं. दैट इज इटरेशन और अ स्प्रिंट. अंडरस्टूड. Yes, sir. Okay. Next level of agile planning is daily. So, what the features are done and which ones will be done today.
इज एनीथिंग ब्लॉक्ड? हम क्या करने वाले हैं मीन्स व्हेन यू हैव द अजाइल प्लानिंग, व्हेन यू अडॉप्ट द अजाइल मेथोलॉजी, एट दैट टाइम यू हैव द डेली मीटिंग्स। आज हमें क्या करना है, कल हमने क्या किया था, और कल हमें क्या करना है। दैट इज अजाइल प्लानिंग। आपके आपके जो स्क्रम मास्टर होता है, अभी ये स्क्रम मास्टर को नहीं पता, ये मुझे वापस, मैंने हजार बार बोला है स्क्रम मास्टर कौन होता है, कौन होता है स्क्रम मास्टर? हु इज स्क्रम मास्टर? प्रोजेक्ट मैनेजर। यस, प्रोजेक्ट मैनेजर। प्रोजेक्ट मैनेजर क्या करता है आपका? स्क्रम मास्टर डेली मीटिंग लेता है। जब हम अजाइल मेथोलॉजी अडॉप्ट करते हैं तब उसकी डेली मीटिंग होती है, रोज सुबह जब ऑफिस का टाइम चालू होता है तब रोज सुबह मीटिंग होती है। उसमें बोलते हैं आज क्या करना है हमें, हमने कल क्या किया, क्या डेवलपमेंट किया, और हमें कल क्या करना है। अंडरस्टूड? दैट इज डेली मीटिंग इज देयर व्हेन यू अडॉप्ट द अजाइल मेथोडोलॉजी। आपको दिखाई दे रहा है ये फिगर, ये डायग्राम दिखाई दे रहा है? डायग्राम दिखाई दे रही है कि आपको? ये लेवल्स, डिफरेंट लेवल्स। यस। Yes, sir. Yes, sir. कितना देर लगाते हो यस बोलने के लिए भी? अरे यार। So strategy planning. So this level of planning will usually be conducted by the senior leadership team, that is the scrum master, and they laying out the strategy for the organization, specify how they are going to achieve the corporate objective. And for example, the senior leadership team in the retail organization decide to invest in a new digital strategy. The goal is to increase the revenue by the 20%. So this strategy is a long term and will be realized over the next 2 years. So when you are going to adopt the agile methodology, at that time you have the strategy plan, हमें क्या करना है, और वो स्ट्रैटेजी आपकी कम से कम 2 साल चलेगी। देन नेक्स्ट दैट इज अ पोर्टफोलियो प्लानिंग। सो एट द नेक्स्ट लेवल डाउन, हाउ टू प्लान आउट द पोर्टफोलियो और द प्रोडक्ट सर्विसेज। मीन्स आप जो प्रोडक्ट बनाने वाले हो, उसमें प्रोडक्ट में क्या होगा, उसमें कौन से सर्विसेज रहेंगे। जैसे कि बहुत सारी कंपनी है अभी अजल मेथोडोलॉजी से ही उनका प्रोडक्ट डेवलप करती है। तो जैसे कि पोर्टफोलियो प्लानिंग में क्या रहेगा, आपका प्रोडक्ट सर्विस क्या देगा टू अचीव द यूर स्ट्रैटेजी। आपके प्रोडक्ट या आपका जो सर्विस आप देने वाले हो, उससे आपको स्ट्रैटेजी कैसे आप ये करोगे, अचीव करोगे। मीन्स आपने स्ट्रैटेजी क्या बनाया था, आपका रेवेन्यू क्या बढ़ना चाहिए, 20% से बढ़ना चाहिए, आपका मुनाफा 20% में बढ़ना चाहिए। सो व्हेन यू गो फॉर द पोर्टफोलियो प्लानिंग, एट दैट टाइम इन पोर्टफोलियो यू डिसाइड what the products we are going to develop, what are the different services we are delivering to the customer by using the product। आप ये प्लानिंग करते हो, और उससे आपका ये जो आपने डिसाइड किया था 20% रिवेन्यू बढ़ना चाहिए, वो कैसे अचीव होगा। दैट इज अ पोर्टफोलियो प्लानिंग। जैसे कि मैंने अभी बताया आपको कि अभी गूगल है या फेसबुक है, वो सब जो बड़ी बड़ी कंपनी है अब अजाइल मेथोडोलॉजी फॉलो करते हैं। जैसे कि व्हाट्सअप है, व्हाट्सअप किस कंपनी का है? व्हाट्सअप किसका है प्रोडक्ट? अरे पता है कि नहीं आपको? हेलो। व्हाट्सअप प्रोडक्ट किसका है? धनश्री वेल्दे, धनश्री धस ईशा। सर फेसबुक का ही है ना? हाँ फेसबुक का ही है, तो मेटा। बताइए ना। आपको पता होता है लेकिन बोलते नहीं है आप, तो फेसबुक का है कि नहीं?
अभी वो सर्विस, वो सारे सर्विस देते हैं। पहले व्हाट्सअप था, उसमें कुछ अलग सर्विस थी, अभी उसने उन्हें बढ़ा दिया है कि नहीं? अभी नए नए फीचर ऐड किए हैं। अभी कौन से फीचर ऐड किए हैं? जो हमने मैसेज देखे हैं वो 10 दिन के बाद या 20 दिन के बाद ऑटोमेटिक डिलीट हो जाएगी, ये फीचर उन्होंने ऐड किया है कि नहीं? यस, यस सर। है कि नहीं? सो हम जब पोर्टफोलियो प्लानिंग बनाएंगे तब हम डिसाइड करेंगे कि हम कौन सी सर्विस हमारे प्रोडक्ट में या कौन सा फीचर हम प्रोडक्ट में ऐड करने वाले हैं, ताकि उससे भी हमारा रेवेन्यू बढ़ सकेगा। So based on the strategy, the different portfolio teams come up with the ways to make the purchase faster. The digital team decide to introduce the new mobile app to its portfolio. This will be a great way to connect the customer to a new buying experience from the home. So हम ऐसा पोर्टफोलियो प्लानिंग करेंगे कि इसमें प्रोडक्ट में कौन से फीचर ऐड करें ताकि हमारे जो नए कस्टमर है वो हमारे प्रोडक्ट को खरीद ले। दैट इज द पोर्टफोलियो प्लानिंग। अंडरस्टूड? यस सर। वेरी गुड। Then product planning. So product planning, when you adopt the agile methodology, it will plan how the product will evolve the change in the medium term. This level of planning will start to involve the team members such as the project manager, that is the scrum master, then product managers and research manager to understand the roadmap of the change. Suppose you are going to develop a product, आपको आपका प्रोडक्ट बनाना है, तो at that time you involve the product manager, you involve the team manager, you involve the research manager, and you decided how you are going to develop this particular product. That is a product planning. A product team is assembled for the new app, and they use the market research to devise a roadmap of the features for that particular app, and they spend the time for the planning out at the high level, the effort for the each feature and which ones to deliver over the next 12 months. सो इन प्रोडक्ट प्लानिंग में आपका प्रोजेक्ट मैनेजर होता है, आपके रिसर्च की टीम होती है, रिसर्च मैनेजर होता है, देन प्रोडक्ट मैनेजर होता है। तो वो डिसाइड करते हैं उस प्रोडक्ट में कौन से फीचर आने चाहिए। तो रिसर्च की टीम है वो डिसाइड करती है कि कौन से फीचर आने चाहिए, उसका फीचर क्या है ऐप का। देन यू उस नेक्स्ट 12 मंथ में या नेक्स्ट 1 ईयर में क्या होने वाला है, what different features you are going to now add into that particular product, what are the different services you are going to deliver to the customer by using your product. So this will be uh, conducted, or this will be planned in a product planning. Understood? Yes, sir. Then release planning. So with, when you have the product planning, then with the map of that particular product planning of changes identified, then manage how to release those changes to the customer, set the business framework for that to happen. Then here the project manager, delivery manager works with the technical lead to plan the process to support technical release, and technical team assemble the plan structure around the deployment of the initial app features. And they also, this particular team also plan ahead, detailed planning is there, and how they are will manage the integration of the different future features moving the forward. And they are planned in the 2 month cycle for each release. So in release planning, what are the different features you are going to develop? जैसे कि वर्जन होते हैं ना, फर्स्ट रिलीज हो गया, जैसे कि एंड्रॉयड आया था, एंड्रॉयड का पहले वर्जन आइसक्रीम था, बाद में जेली बीन आ गया, बाद में अभी कौन सा सैंडविच चालू है, या अभी बाद में 11 कुछ तो भी है। सो इन रिलीज प्लानिंग you are thinking about what are the different features you are going to offer to the customer. Then iteration planning. So when you have the product, then how you are going to develop that particular product in a iteration, that is in a sprint. So that is the planning of iteration planning. Then daily planning. So in if you adopt the
particular software to be developed by using agile methodology. At that time, that particular scrum master will take the daily planning with your team members, that is with the developer, with the testers, with the product owner, what is today what we are going to do, tomorrow what we have to do, and yesterday what we have done. So this is a daily meeting hoti hai, and you access that particular manager will access the problem uh, currently facing by the team member, and each day the team will get together to communicate their individual progress toward the completion of their iteration, and each team member can input what they have completed, what they have left to do, and raise any issue, and it will be the role of the project manager, delivery manager, or a scrum master to facilitate the session and ensure the progress to remains on the track. And so each day there is a meeting, that is the daily meeting. Understood? So these are the different level of agile planning. Understood? Yes, sir. Okay. So today we are going to stop here. Tomorrow we will see. Okay? The next topic. Okay? Okay, thank you, sir. Okay, sir. Thank you, sir.